Assalamu alaikum, welcome back with a new speaking practice. Today I will share 40 useful Urdu to English sentences that will help you in expressing yourself in different conditions. So without wasting time, let's get started. अगर मैंने तुम्हें नाराज़ किया है तो माजरत. If I have upset you, then I'm sorry. If I have upset you, then I'm sorry. अगर मैंने तुम्हें नाराज़ किया है तो माजरत. अगर तुमसे गलती हुई है तो इसे दुरुस्त कर लो. इफ़ यू मेड अ मिस्टेक देन फिक्स इट. इफ़ यू मेड अ मिस्टेक देन फिक्स इट. अगर तुमसे गलती हुई है तो इसे दुरुस्त कर लो. अगर किसी ने तुम पर भरोसा किया है तो इसे ना तोड़ो. इफ़ समवन हैज़ ट्रस्टेड यू डोंट ब्रेक इट. इफ़ समवन हैज़ ट्रस्टेड यू डोंट ब्रेक इट. अगर किसी ने तुम पर भरोसा किया है तो इसे ना तोड़ो. अगर तुमने हेरा फेरी की है तो साफ साफ बता दो. इफ़ यू चीटेड देन एडमिट इट ऑनेस्टली. इफ़ यू चीटेड देन एडमिट इट ऑनेस्टली. अगर तुमने हेरा फेरी की है तो साफ साफ बता दो. अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो ये अच्छी बात नहीं. इफ़ यू डिड दिस ऑन पर्पस इट्स नॉट अ गुड थिंग. इफ़ यू डिड दिस ऑन पर्पस इट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो ये अच्छी बात नहीं. अगर तुम सच कहोगे तो सब तुम पर यकीन करेंगे. इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरी वन विल बिलीव यू. इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरी वन विल बिलीव यू. अगर तुम सच कहोगे तो सब तुम पर यकीन करेंगे. अगर तुम वक्त ज़ाया करोगे तो पछताओगे. इफ़ यू वेस्ट टाइम यू विल रिग्रेट इट. इफ़ यू वेस्ट टाइम यू विल रिग्रेट इट. अगर तुम वक्त ज़ाया करोगे तो पछताओगे. अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे. इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड. इफ़ इट रेन्स वी वॉन्ट गो आउटसाइड. अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे. वॉन्ट विल नॉट की मुख्तसर फॉर्म है. अगर वो फ़ोन करे तो मुझे बता देना. इफ़ ही कॉल्स लेट मी नो. इफ़ ही कॉल्स लेट मी नो. अगर वो फ़ोन करे तो मुझे बता देना. अगर तुमने मेहनत ना की तो तुम नाकाम हो जाओगे. इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. अगर तुमने मेहनत ना की तो तुम नाकाम हो जाओगे. अगर वो माफ़ी मांग ले तो बात ख़त्म कर दो. इफ़ ही एपोलोजाइजेस देन लेट द मैटर एंड. इफ़ शी एपोलोजाइजेस देन लेट द मैटर एंड. अगर वो माफ़ी मांग ले तो बात ख़त्म कर दो. अगर खाना ठंडा हो गया है तो इसे गर्म कर लेना. इफ़ द फूड गेट्स कोल्ड देन हीट इट अप. इफ़ द फूड गेट्स कोल्ड देन हीट इट अप. अगर खाना ठंडा हो गया है तो इसे गर्म कर लेना. अगर बिजली चली गई तो पंखा बंद हो जाएगा. इफ़ द पावर गोज़ आउट द फैन विल स्टॉप. इफ़ द पावर गोज़ आउट द फैन विल स्टॉप. अगर बिजली चली गई तो पंखा बंद हो जाएगा. अगर वक्त पर ना निकले तो हम लेट हो जाएंगे. इफ़ वी डोंट लीव ऑन टाइम वी विल बी लेट. इफ़ वी डोंट लीव ऑन टाइम वी विल बी लेट. अगर वक्त पर ना निकले तो हम लेट हो जाएंगे. अगर वो तुम्हें बुलाए तो फ़ौरन जाओ. इफ़ ही कॉल्स यू गो इमीडिएटली. इफ़ ही कॉल्स यू गो इमीडिएटली. अगर वो तुम्हें बुलाए तो फ़ौरन जाओ. अगर वो मदद मांगे तो इनकार ना करना. इफ़ ही आस्क्स फॉर हेल्प डोंट रिफ्यूज़. इफ़ शी आस्क्स फॉर हेल्प डोंट रिफ्यूज़. अगर वो मदद मांगे तो इनकार ना करना. अगर वो थक गया है तो उसे आराम करने दो. इफ़ ही इज़ टायर्ड लेट हिम रेस्ट. अगर वो थक गई है तो उसे आराम करने दो. इफ़ शी इज़ टायर्ड लेट हर रेस्ट.
اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤ. If he is sick, call the doctor. If she is sick, call the doctor. اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤ. اگر وہ آ رہا ہے تو دروازہ کھول دینا. If he is coming, open the door. اگر وہ آ رہی ہے تو دروازہ کھول دینا. If she is coming, open the door. اگر تم بھول گئے ہو تو دوبارہ یاد کر لو. If you have forgotten, then recall it again. If you have forgotten, then recall it again. اگر تم بھول گئے ہو تو دوبارہ یاد کر لو. اگر وہ کھیل رہا ہے تو اسے تنگ مت کرو. If he is playing, don't disturb him. اگر وہ کھیل رہی ہے تو اسے تنگ مت کرو. If she is playing, don't disturb her. اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کھا لو. If you are hungry, then eat. If you are hungry, then eat. اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کھا لو. اگر وہ روتی ہے تو اسے دلاسا دو. If she cries, comfort her. اگر وہ روتا ہے تو اسے دلاسا دو. If he cries, comfort him. اگر وہ ہنس رہی ہے تو یقیناً خوش ہے. If she is laughing, she is surely happy. اگر وہ ہنس رہا ہے تو یقیناً خوش ہے. If he is laughing, he is surely happy. اگر وہ غصے میں ہے تو اسے اکیلا چھوڑ دو. If he is angry, leave him alone. If she is angry, leave her alone. اگر وہ غصے میں ہے تو اسے اکیلا چھوڑ دو. اگر وہ دیر کر دے تو انتظار کر لینا. If he is late, wait for him. If she is late, wait for her. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا. If you don't understand, then ask. If you don't understand, then ask. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا. اگر تم نے اس کی مدد کی تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. If you help him, he will always remember. اگر تم نے اس کی مدد کی تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گی. If you help her, she will always remember. اگر وہ تمہیں بلائے تو انکار نہ کرنا. If he calls you, don't refuse. If she calls you, don't refuse. اگر وہ تمہیں بلائے تو انکار نہ کرنا. اگر وہ محنت کرے گی تو اچھی نوکری ملے گی. If she works hard, she will get a good job. اگر وہ محنت کرے گا تو اچھی نوکری ملے گی. If he works hard, he will get a good job. اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہے. If he is silent, it means something is wrong. If she is silent, it means something is wrong. اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہے. اگر تم ہنسو گے تو دوسرے بھی خوش ہو جائیں گے. If you smile, others will also be happy. If you smile, others will also be happy. اگر تم ہنسو گے تو دوسرے بھی خوش ہو جائیں گے. That's all for now. I hope you will practice these sentences in your daily conversation and you will see that your English is improving naturally day by day. Inshallah, we will meet again with a new speaking practice. Till then, take care. Allah Hafiz.